So hey guys, this is Harnoor, a software engineer in the US, and in this video we'll be talking about the placement culture or the placement differences between US and India. So let's get started. So the goal of this video is not to tell you कि placements US में better होती हैं या फिर culture better होता है, but to tell you कि चाहे आप किसी भी university से हो in India or wherever, you can still get placed at these FAANG companies. So that's why we have Sameer here, who recently got an off-campus placement at Google from India. So hi Sameer, can you please introduce yourself? Hi, Harun. My name is Sameer, and I'm a software engineer at Google. And I've graduated from JP Institute of Information Technology, which is not an IIT. So a lot of people ask me how I got there, and I'm here to tell all about that and other off-campus placements. So first of all, Sameer, can you please share a little bit about your background? कि कब आपका passion programming के लिए बढ़ा और when did the dream to get into these FAANG companies start, and when did you actually start preparing for Google? I started programming in 11th, and I discovered something called competitive programming. So competitive programming is like लोग programming problems के ऊपर compete करते हैं, so it's like a competition, and that really started my journey of programming. And मैंने actually JEE नहीं दिया Wait, but why आपने JEE का पेपर क्यों नहीं दिया? because I was so interested in programming and I didn't like physics and chemistry, only like coding and maths, so I did that. And I actually got admitted into IIIT Hyderabad's BTech plus MTech program, but मैंने वो लिया नहीं because I didn't want to do MTech and मैं चाहता था कि मैं घर पर ही रहूँ, so I joined JP. Oh, so इसका मतलब है you always had that perspective कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो या किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, आपको जॉब मिल ही जाएगी because you have a great passion for programming or software engineering already, right? Yeah, kind of. So जब मैं IOI गया था तो I met a lot of people even in college, and most of them would get into like Google and Facebook or ऐसी big in companies. So I thought कि actually the thing is competitive programming में जो problems होती है वो are quite similar to those that you see in interviews. So a lot of people who are good at competitive programming, वो अगर ठीक से समझा दे अपना सॉल्यूशन, बोलना ठीक से बोल ले इंटरव्यूज में, so they can get a job at any of these companies. So I was kind of sure that I would get a good company at least, no matter which college I go to. So before talking about the placement differences, can you please quickly share कि आपकी जर्नी कैसी थी Google? So how did you actually get this off-campus placement, being not from the IIT or NIT? इसका ऑलरेडी बहुत बेनिफिट था कि मेरा भाई ऑलरेडी गूगल में काम करता था, तो उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया, and that's why like I applied for internships. I got a referral because from some other people at Google, Facebook, and other big tech companies. And then internship actually मेरा नहीं हुआ Google का clear. So कुछ problems थी and I fixed those and I got an offer full time at Google just last year. Oh, but wait, इससे बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये उठता है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट फिर भी क्यों यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू एट गूगल और आपको इंटर्नशिप क्यों नहीं मिली? So I actually got rejected twice for the internship by Google. तो पहले time that was like my first ever time giving an interview. तो उस time I had some like inexperience, so I didn't make like all the right clarifications of the regarding the question, and मैं अपना solution ठीक से नहीं समझा पाया. So that kind of like spiraled up and वो interview अच्छा नहीं हुआ, so I was rejected. The second time मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया. एक्चुअली मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, बट Google has this like project matching phase where they like try to find a team for you based on your resume, your interview score, and what your preferences are. So I think मेरा resume में project अच्छा नहीं था, so I didn't get a match. And so for next year I made like a very good project, and then I landed a job. Oh, so this shows number one difference कि इंडिया में जो competitive programming है उसका कल्चर ज़्यादा है as compared to projects. तो आपके हिसाब से मतलब projects और competitive programming को बैलेंस करना चाहिए या फिर you should prefer one over the other? Because मैंने जितनी भी YouTube पे वीडियोस देखी हैं about placements in India, they mainly talk about like data structures, algorithms, and these competitive programming. They never rarely talked about projects. तो आप बताना क्या ज़्यादा किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? So I would recommend doing both because competitive programming shows like you're smart and you can like code up solutions to these small problems that you see in
programming competitions, but you should like make projects to show that you can take that skill and use that to make more complex things. So मैं तो balance recommend करूँगा, but if you can only do one because you don't have like a lot of time, I would recommend doing projects because at least in Google मैंने जो लोग देखे हैं they have like good projects in their resume, but not all of them have like competitive programming experience. So it's kind of weird because मैं अपने चैनल पर competitive programming को बहुत promote करता हूँ to like get job at these FANG companies, but if you can only do one, do projects. So projects are like a must, but competitive programming is like can give you a great edge over other candidates. Oh, so this finally shows that कि FANG companies के लिए चाहे आप इंडिया में हो या फिर यूएस में, projects is definitely must to get into FANG companies. बाकी companies के लिए it could be different, but for FANG आपको projects पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Now finally let's talk about the interview process that you had to go through at Google, and बाद में मैं बताऊंगा यूएस में कैसा होता है. So I'll tell you about like full time का process. So firstly you have like a phone interview where you have like a coding problem, which is data structure and algorithm problem. So this is like 45 minutes over internet. So इसमें you get a result where you can be like rejected, accepted, or maybe they can ask you to take one more phone interview so that like they can get more data about you. And I got actually one more phone interview. So I took one more phone interview and I cleared that actually. Then I was invited to on-site. So my on-site was in London. So I went there and then I had my like on-site interviews. For that you have like 5 interviews. 4 of them are like coding interviews with data structure and algorithms, and one is like googliness and leadership. So in googliness and leadership interviews, they ask you like behavioral and hypothetical questions to like determine if you're like a cultural fit or not. And in coding interview questions, they're like similar to the phone interviews but much harder, and you have like a whiteboard there so you can like explain your solution to them. So did you specifically apply for Google in Europe या फिर India या फिर US? तो basically या फिर आपकी application हर जगह valid होती है. Can you please explain that? So मैंने Google Europe में apply किया था, and that's why like I went for my on-site interviews to London because मेरा एक और company के साथ interview चल रहा था, तो I could have like I kind of like bundled it together in one trip. But I could have gone for interview in any other place in Europe, or I could have gone to India as well for my interviews. And like my application was for Europe, but it's possible to like switch that application to India. So that's like what I was thinking when it was like taking me some time to get a match. But I actually just got a match in Europe, so I just like got an offer from there. सो इसका मतलब है गूगल में आपको अगर यूरोप में या इंडिया में कहीं भी जॉब लग जाती है तो इसका मतलब है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो, और यू हैव टू वर्क इन यूरोप जहाँ पे आपने अप्लाई किया, या फिर यू हैव टू वर्क इन इंडिया वेयर यू फ्रॉम, और यू कैन वर्क प्रीटी मच यूएस और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. So the thing that I talked about, like project matching, that's kind of decides where you work, because wherever you find your team, wherever that is located, you will, but you can give your preferences. So I applied to Europe, but I even said like if I don't find a team in Europe, maybe I can try in India. US is kind of not possible from India because you don't get H1B, so they can't make you work. So you can't work there, so they can't really give you a team there. But I think I could have like wherever I could like get the work authorization, I could have like asked to find a team there. And there's like a time limit for this project matching process. So in that time, you can like find different teams, try to find different teams. So इसका मतलब है चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएस में हो या यूरोप में हो, आपके प्रोजेक्ट्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, और यू कैन से कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, बोथ को हैंड इन हैंड, क्योंकि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स और लाइक योर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ लाइक कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग से अगर आप कंपनी में पहुंच भी जाते हो लाइक इन फर्स्ट स्टेज, बाद में आप स्ट्रगल करोगे इफ़ यू डोंट हैव गुड प्रोजेक्ट्स, आपको अच्छी टीम नहीं मिल पाएगी. सो यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ साइड बाय साइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट और द सेकंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स इंडिया वर्सेस यूएस. तो आप बताना सबसे पहले कि इंडिया में प्लेसमेंट्स कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप, आपका जो नंबर, आपका जो CGPA मैटर करता है कि नहीं, क्योंकि यूएस में नहीं करता, एंड आई विल एक्सप्लेन मोर इन डिटेल लेटर. ओके, सो फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, जब कोई कंपनी लाइक कैंपस में आती है, सो दे लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक मेक प्री सेलेक्ट सम पीपल यूजिंग CGPA. सो जो दे सेट लाइक थ्रेशोल्ड, एंड जिनकी कम होती है उन्हें सिलेक्ट पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, एंड जो बचे होते हैं
they usually give an online test. So after giving an online test, some like small number of people are selected, and then they go through some interviews. Like 3-4 interviews होते हैं जो like पूरे दिन चलते रहता है campus में, and at the end of those interviews they select like however many people they want to select. And this is like similar, at least in my college ये होता था, and this is very similar to what happens in triple IT. ओह, तो इसका मतलब है इंडिया में जीपीए इज़ लाइक अ गेम चेंजर. मतलब आपकी जीपीए, आपकी जो टेस्ट की स्कोर या फिर आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज को थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू योर प्रोजेक्ट. क्योंकि यूएस में तो ये है कि अगर मैंने ज़्यादा कंपेटिटिव प्रोजेक्ट्स किए हैं या फिर अगर मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिससे मतलब सेकेंड अवार्ड मिला था हैक एटीएल में, मुझे पता नहीं, शायद मेरे पास 10 के आसपास अवार्ड्स है, तो उसके कारण मतलब मुझे कॉल बहुत इजीली आ गई थी और मेरे किसी ने मतलब हैकर रैंक पे रैंक नहीं देखा. मेरा कोड शेफ जो भी आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग देखते हो उसमें मेरा किसी ने रैंक नहीं देखा था. तो दैट शोज द डिफरेंस. तो अब लेट मी टेल यू, देयर आर लाइक 4 ways फॉर अ स्टूडेंट टू गेट हायर्ड इन द यूएस. नंबर 1 कुड बी करियर फेज, जस्ट लाइक द ऑन कैंपस प्लेसमेंट इन इंडिया. तो मतलब आप जाते हो, यू गिव योर पिच एंड लाइक यू ट्राई टू कनेक्ट विद अ पर्सन, एंड अगर आपने पिच अच्छी दी, अगर आपको उनको आपका रिज्यूमे पसंद आया, देन दे विल कॉल यू बैक फॉर इंटरव्यू. दैट्स नंबर 1 वे. नंबर 2 वे इज़ कि आप अप्लाई ऑनलाइन करो. किसी भी कंपनी में आप ऑनलाइन कर सकते हो, लाइक इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, और टू दैट कंपनी डायरेक्टली थ्रू दैट कंपनी नेम आप गूगल पे सर्च करो अप्लाई फॉर गूगल या फिर अप्लाई फॉर लिंक्डइन, तो या फिर अप्लाई फॉर फेसबुक. तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो. एंड नंबर 3 वे वुड बी रेफरल, जस्ट लाइक समीर ऑलरेडी सेड कि उनका भी रेफरल के थ्रू हुआ था. एंड नंबर 4 वे, दैट इज़ माई फेवरेट वे, इज़ हैकाथॉन्स. क्योंकि मेरे हैकाथॉन्स से इतनी ज़्यादा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, होम डिपो, पेपैल, माइक्रोसॉफ्ट. तो लाइक व्हेन यू गो टू दीज हैकाथॉन्स स्पॉन्सर्ड बाय दीज कंपनीज, उनसे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो. तो हैकाथॉन्स में आपको वो चाहे रेफरल दे या ना दे, पर वो आपको कनेक्ट करवा देते हैं कि एचआर से, और बाद में मोस्ट लाइकली आपको कॉल मिल जाती है अगर आपने प्रोजेक्ट किया है उस कंपनी के लिए या फिर आपने प्रेजेंटेशन दी है. सिर्फ प्रेजेंटेशन के कारण इंटरव्यू मिलना ईजी हो जाता है, चाहे आपने हैकाथॉन में जीता है या नहीं जीता. एंड नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट सैलरी. तो जब आप गूगल के लिए अप्लाई करते हो, चाहे आप इंडिया में अप्लाई करते हो या यूरोप, तो इंडिया में कितनी मिलती है, यूरोप में कितनी मिलती है, या फिर यूएस में मिलती है, और कहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है? So I'll tell you about the compensation in like US and India, because I don't want to like really reveal my own compensation here. So in US, like the base is like 120,000. That's what like I've read online, and stocks are like 100,000 for 4 years. But for some reason, like people add like एक साल की compensation में डाल देते हैं to like make it bigger. And then there's like 15% bonus and some like relocation bonus and stuff. And for India, it's like total CTC is like 40-50 lakhs, and like base is like 14 lakhs to like 16-17 lakhs. At least that's what like I've heard from my friends. So that's like the compensation in US and India. So इससे ये बात बिल्कुल क्लियर होती है, whenever we talk about 1.5 crore पैकेज या फिर 50 लाख इन इंडिया, वो हर साल के नहीं होते, इट्स लाइक बेनिफिट्स. तो यूजुअली हर साल यूएस में आपको 110 के मिल सकते हैं इन बे एरिया, एंड इंडिया लाइक 13 to 15 लाख पर एनम. सो दैट्स व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट. Now, Sameer, what will be some of the final career tips you would like to give out to the prospective students? Okay, so जो ये big tech companies होती है, they get a lot of resumes. So to get like an interview, you should try to like get a referral, because that's like the best way to get your resume noticed. So to get a referral, like you should know people that work at the company. So while you're in college, go to like these events and stuff, and maybe if you're lucky, someone you know will get a job there, and then they can refer you. And once you get an interview, then for clearing that interview, you need to like have some good problem solving skills so that you can like solve the question. So to build that, you should like, you can do competitive programming, or you can just like even do complex projects and like build up your coding skills and your thinking skills to like clear the interview, and then you'll like definitely land a job at one of these tech companies. So thank you so much, Sameer, for sharing your valuable information. Now I'll recommend all of you guys to check out Sameer's channel for more career tips related to getting into these spam companies as well, like in terms of resume या फिर हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर की हुई है. And now finally, time for giveaway. That's the most important part. So I'm collaborating with Geeks for Geeks, not a paid promotion, just trying my best to give out as much free content as possible. So this is like a 10-week program. So this course is called Self-Laced Data Structures and Algorithms course on Geeks for Geeks. So this will teach you how to get your level from 0 to 10 in these 10 weeks. आप weekly progress करोगे in data structures and algorithms so that you can get into these FANG companies as well. क्योंकि आपको पता है like India में competitive programming is more important, so definitely this can help you out. तो
all you have to do is to get this to win this giveaway, follow me on Instagram, subscribe to the channel, like, share, and also like check out the link in the description below जहाँ पे और details दिए. आपको एक बटन दबाना है and you will be able to enroll in this giveaway, and randomly results decide होंगे. And initially I have thought about 10 winners. अब अगर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं then I might change it to with the help of Geeks for Geeks to 20 as well. So I hope the best person who deserves to win actually wins, and I will definitely be able to announce the winners within a week, especially on Instagram, so do follow me on that. So that's pretty much it. Thanks so much for watching, and I will see you guys in the next one. Goodbye.